सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पहले. द इनपुट रेजिस्टेंस इज लीस्ट इन केस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर. सो अगर आपने जो कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को अगर ध्यान से देखा हो, वी हैव कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर. जो कॉमन बेस है इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है दैट इज 0 आइडियली, एंड द आउटपुट रेजिस्टेंस इज इंफिनिटी. ठीक है यार बेटा. और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं, जो कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है और आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है इट इज 0 and input resistance is infinite. But the common emitter is having Rin greater than the Rin of common emitter is greater than Rin of common base. Clear? That is not zero. Clear? Similarly, the R output of common emitter is less than the R output of common base. So this is the whole about the resistance, input and output resistance, common base, common emitter and a common collector. ठीक है. So very low, very high, very low, very high, very low and moderate. ठीक है. So अब चेक करते हैं. Input resistance is least in the case of, so input resistance is least in case of what? Common base configuration and highest in case of common collector configuration. So for this question the correct answer is B. Next question देखते हैं. A transistor connected in common base configuration has high input resistance, low output resistance, high input resistance, high output resistance, a low input resistance and high output resistance, a low input resistance and low output resistance. ठीक है. So अभी मैंने यहाँ बताया जो common base configuration है BJT का, उसका जो input resistance होता है that is low, ideally it is 0 and practically it is very low. क्लियर है यहां तक. सो फ्यू ओम लाइक 10 ओम और 100 ओम. क्लियर है. और आउटपुट जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज 500 किलो ओम और आइडियली इट इज इनफाइनाइट. ठीक है. सो अगर मैं ट्रांजिस्टर कनेक्टेड इन कॉमन बेस हैज, कॉमन बेस जो ट्रांजिस्टर है दैट इज R in is low and R output is high. अगर यहां प्रैक्टिकल रिजल्ट की बात करूं तो इट इज few ohm like 10 ohm or 100 ohm range. Clear? And output resistance is of 500 kilo ohm. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? लो इनपुट रेजिस्टेंस एंड हाई आउटपुट रेजिस्टेंस. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बिल्कुल सही सी होगा. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना. फोर्थ क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट ए पॉसिबल बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन. सो हमने बीजेटी का कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था? कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर. दीज आर द 3 मेन बीजेटी कॉन्फ़िगरेशन. सो चेक करते हैं. कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल ठीक है, कॉमन इमीटर भी बिल्कुल ठीक है, कॉमन करंट कोई भी कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं होता है. क्लियर है. कॉमन कलेक्टर भी होता है. सो इट इज CC कॉमन कलेक्टर, देन इट इज कॉमन इमीटर एंड इट इज कॉमन बेस. सो दीज आर द 3 कॉम्बिनेशन. सो यही करेक्ट होगा, ये नहीं होगा. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा. फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. ए ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर हैज ए हाई इनपुट रेजिस्टेंस and high output resistance, a very low input resistance and a low output resistance, a medium input resistance and high output resistance, a high input resistance and low output resistance. ठीक है. तो ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ऑप्शंस जो हैं यहाँ बहुत अच्छे सेट किए गए. तो देखिएगा जरा, अगर हम तीनों की बात करें, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर, तो सबसे पहले याद करने का तरीका क्या है? आपको कॉमन बेस से स्टार्ट करना है. कॉमन बेस, R इनपुट 0, R output infinite, then just reverse this, R in infinite, R output 0. ठीक है. यहाँ तक आइडियली बात करता हूँ. तो कॉमन इमीटर की अगर मैं बात करता हूँ, कॉमन इमीटर में जो इनपुट रेजिस्टेंस है दैट इज ऑफ 800 ओम. सो इट इज मीडियम इनपुट रेजिस्टेंस, अगर मैं कंपैरिजन की भी बात कर रहा हूं, अगर मैं इनपुट रेजिस्टेंस, कॉमन इमीटर के जो इनपुट रेजिस्टेंस है और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उनको मैं कंपेयर करता हूं, सो आर इन ऑफ कॉमन इमीटर दैट इज ग्रेटर देन
R in of common base, but it is less than R in of common collector. Clear? So which is having highest input resistance, common collector, then the medium, then the lowest. So this is the decreasing order of input resistance. Clear? So the common emitter is having input medium resistance, and the medium is only giving one option, and its output resistance is of 50k ohm order, so it is high resistance. ठीक है, अब मैं इसको कंपेयर भी कर लेता हूं. अगर मैं आउटपुट रेजिस्टेंस को यहाँ कंपेयर करता हूं, सो आर आउटपुट ऑफ कॉमन इमीटर, क्लियर है, सो इट इज ग्रेटर देन आर आउटपुट ऑफ व्हाट, कॉमन कलेक्टर, and it is less than the R output of common base. So among all these three, the common base is having highest output resistance, and the lowest is what given by the common collector, and moderate is given by the common emitter. Clear है? अब moderate तो कहीं है ही ऑप्शन में नहीं, so we will have high output resistance. So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा. मैंने वैल्यूज भी बता दी है अगर किसी एग्जाम में आ जाए. सो कॉमन इमीटर का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है दैट इज 800 ओम एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज ऑफ 50 किलो ओम. सो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th and 6th. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर सर्किट हैव लोएस्ट गेन, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर, नन ऑफ द अबव. ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं, हमने बहुत टाइम जो है इनपुट रेजिस्टेंस और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है उनका कंपैरिजन देख लिया था. इस बार जो क्वेश्चन में पूछा गया है गेन. नाउ तो अगर मैं बात करता हूं, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ गेन, करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन. ठीक है, मैं सबके हिसाब से आपको बताऊंगा कि कौन सा जो मोड है या कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके लिए सुटेबल है. ठीक है, सो वी हैव 3 कॉन्फ़िगरेशन, द कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर. नाउ अगर मैं कॉमन बेस की बात करता हूं, देन इट्स करंट गेन इज अप्रोक्सीमेटली 1, बट इट्स वोल्टेज गेन इज वेरी हाई. So common base configuration is used as a voltage amplifier, but they are asking for the lowest. So that's sure that the common base is not in option. Clear है यहाँ तक? Now common collector की बात करता हूँ, then it is current gain is very high. That's why this common collector is used as a current amplifier, but its voltage gain is approximately 1 or less than 1. So the common collector has lowest gain, but actually they are asking the voltage gain. They are asking for the voltage gain. जब भी नहीं दिया है, then you just use voltage gains. Clear है? So common collector configuration has lowest voltage gain. So you just choose this thing. Clear है यहाँ तक? Now, अब अगर हम common emitter की बात करें, so these configuration has moderate current and voltage gain. That's why this amplifier is used as power amplifier, and this amplifier, the common base amplifier, is used as voltage amplifier, and the common collector is used as current amplifier. I hope so. कौन सा करंट एम्पलीफायर है, कौन सा वोल्टेज एम्पलीफायर है, कौन सा पावर एम्पलीफायर है, क्लियर हो गया हो. और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो भी निकल पाया. सो लोएस्ट गेन जो है वो किसका होता है, कॉमन बेस का होता है. सो फॉर दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, नाउ 6th क्वेश्चन देखते हैं. इन ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर द टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन व्हिच विल गिव बोथ वोल्टेज एंड करंट गेन. क्लियर? तो अगर मैं बात करूं ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जिसका जो करंट गेन भी अच्छा है और जो वोल्टेज गेन भी अच्छा है. नाउ पावर क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट. इफ इट इज मॉडरेट, both moderate, then power gain will be high. That's why we are using the common emitter as power amplifier. क्योंकि अगर यहां से बात करें, अगर मैं पावर की बात करूं, वोल्टेज गेन कम है, सॉरी करंट गेन कम है, वोल्टेज गेन हाई है, देन इट इज लो. Similarly,
voltage gain low, current gain high, so low, but it is giving moderate both the current gain and voltage gain. That's why this is suitable for the power amplifier application. So यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा which will give you both the voltage gain and current gain. So अच्छा voltage gain और current gain सिर्फ एक ही configuration देता है, that is what known as common emitter. This is common emitter. So A option is correct है. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर हाईएस्ट पावर गेन व्हाट कॉन्फ़िगरेशन यूज कॉमन कलेक्टर, कॉमन मीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन सोर्स. कॉमन सोर्स जो है आपका मॉसफेट में आता है. ठीक है. सो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, सो हाईएस्ट पावर गेन अगर आपको याद हो, कॉमन मीटर हैज मॉडरेट करंट गेन and moderate voltage gain. So a power gain is AV into AI. So both are high or moderate, then power gain will be high. So common emitter configuration produces highest power gain because its voltage gain and current gain is moderate. That's why its power gain is highest. The common collector is used as the common collector or the common base. First, common base is used as a voltage amplifier, but its current gain is less than 1. And the common collector is used as current amplifier or current gain, giving highest current gain, but the voltage gain is less than unity. So best choice for power amplifier is what? The common emitter configuration. So for this question, the correct answer is B. ठीक है यहाँ तक. Next question देखते हैं. The beta in a transistor configuration is the current gain of now. Common base, common source, common drain, common emitter. It is in MOSFET. It is in MOSFET again. So अगर हमारे पास बात करें, तीन कॉन्फ़िगरेशन थे, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, इट इज कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर. सो इन कॉमन बेस वी हैव अल्फा, इन कॉमन इमीटर वी हैव बीटा एंड इन कॉमन कलेक्टर वी हैव गामा. क्लियर है यहाँ से? नाउ अल्फा इज लेस देन 1, beta is greater than 1 and gamma is very greater than 1. So the increasing order is this: alpha is lowest and gamma is highest. So beta कौन से configuration का current gain है? It is common emitter. So for this question the correct answer is D. ठीक है. next question देखते हैं. Now 9th और 10th question देखते हैं. transistor configuration producing the highest output resistance, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस एंड नन ऑफ दिस. ठीक है. सो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपको याद हो गई, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर, वी हैव 3 कॉन्फ़िगरेशन. सो जो कॉमन बेस है, इनपुट रेजिस्टेंस 0, आउटपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट. कॉमन कलेक्टर, इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, आउटपुट रेजिस्टेंस 0, एंड दीज आर हैविंग मॉडरेट Rn and high output. ठीक है. So in a transistor configuration producing highest output resistance, so highest output resistance is given by common base. So for this question the correct answer is C. ठीक है. Now 10th question देखते हैं. The set of transistor characteristic which enable alpha to be determined directly from the slope is common base characteristic, common emitter characteristic, common base input characteristic and common emitter output characteristic. ठीक है. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, सबसे पहले अल्फा डिटरमाइन करते हैं. सो अल्फा इज रिलेटेड टू कॉमन बेस फर्स्ट थिंग, एंड कॉमन बेस हैज 2 कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक. ठीक है. अगर हम कॉमन बेस की बात करते हैं, सो इफ बेस इज कॉमन, सपोज दिस इज BJT, this is your BJT, then this base is common, then it is emitter and it is collector. So input is called BBE comma IE. Clear? So a curve drawn between the BBE and IE for different value of collector base voltage is called the input curve. Clear है? And output की अगर मैं बात करता हूं, output, so output is what? VCB comma IC and here IE. So output characteristic is a curve drawn between the collector based voltage
and collector current for different value of the IE. Clear है यहाँ तक? So this curve is like that. This curve is like that. IC and BCB. ठीक है? Now if you have the basic knowledge of all this configuration, then this curve is like that. This thing. This curve is like that. Now for IE0, this is the, then it is IE suppose 1 milliamp, then IE is 2 milliamp, then IE is 3 milliampere. Clear है यहाँ तक? Or in microampere, whatever. Clear है यहाँ तक? So if you see this slope, the collector and collector base voltage, collector current and collector base voltage. So from this curve we can see, if you know the IC, if you know the IE, then the alpha is what? Alpha is the gain. So output is collector current and input is what? Emitter current. So alpha is just IC by I. So you can just have IC value, and corresponding for IE you can find the IC, then you can determine the alpha. So the correct answer should be common base output characteristic. Clear है? So अगर common base की जो output characteristic है, that can be drawn, then we have the value of alpha. Clear है? But there is no option that giving you the common base output characteristic. तो हमें क्या simply choose करना पड़ेगा? Common base characteristic. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए बिल्कुल सही होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ 11th 12th क्वेश्चन लेते हैं. द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद हाई इनपुट रेजिस्टेंस, लो आउटपुट रेजिस्टेंस and voltage gain just below the unity and no phase reversal between the input and output. So बहुत सारी प्रॉपर्टी का एक कॉम्बिनेशन भेजा है आपके सामने, और ऑप्शन है कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, आइदर बी और सी, दैट इज कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर. तो अगर मैं बात करता हूं सॉल्यूशन की ना, तो अगर हम बात करते हैं, हमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं चाहिए, नो फेज शिफ्ट. सो नो फेज शिफ्ट इज no phase shift between input and output, and output is given by common collector or common base. So the common emitter choice we have wrong. When C is wrong, the D is wrong also, because C is included in the D. So we have either A option or B option. Now अगर मैं common base की बात करता हूं, तो common base का जो input resistance था that is 0, और common collect इसका जो output resistance था that is infinite. बट हमसे क्या पूछा है? इनपुट रेजिस्टेंस हाई, और इसका इनपुट रेजिस्टेंस कैसा होता है? लो होता है, और आउटपुट रेजिस्टेंस हाई. तो हमारे जो कॉमन बेस है वो भी चॉइस खत्म हो गई. तो एक हमारे पास जो सिंपल चॉइस बची है वो क्या है? ए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सो कॉमन कलेक्टर एक ऐसा एम्पलीफायर है जिसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है, एंड द voltage gain is just close to 1, or simply we can say the less than unity 1. So this configuration is not suitable as voltage amplifier, but it provides better current gain. That's why this amplifier is suitable for current amplification or current amplifier. Clear है? Next question देखते हैं, 12th question. Which transistor configuration is most suitable for impedance matching? Okay, so impedance matching, we will have the high input resistance. The requirement is high input resistance and low output resistance, and this quality or this configuration or this condition is given by only one configuration, that is called common collector. Common collector has high input resistance and low output resistance. That's why it is suitable for impedance matching. Clear है? So for this question the correct answer is A. Clear है? Next question देखते हैं. 14 question लेते हैं. The transistor configuration which can be used as a constant current source, common emitter, common collector, common base, and last है none of the above. ठीक है? So answer देखते हैं इस question का. Now we have to find that configuration which is used as a constant current source. That means the input and output current, are
same. It means the gain is unity. The gain is unity. So हमें ऐसा कॉन्फ़िगरेशन देखना है जिसमें आउटपुट और जो इनपुट करंट है दैट शुड बी ऑफ क्लोज टू इक्वल, ठीक है, और द गेन इज इंफिनिटी. सो अगर हम बात करें इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन the current gain is alpha, and alpha is defined as the ratio of the output current upon the input current, and these are approximately equals to 1, but in practical system alpha is less than 1. Clear? So IC equals to alpha I. Clear? Then in common base configuration the output can be represented as a dependent current source. ठीक है. So alpha I. Now this is the value of output current. So it is a controlled current source example. क्लियर है यहाँ तक. So इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा that is what? Common base. ठीक है यहाँ तक. 14 क्वेश्चन देखते हैं. The common collector BJT amplifier has, अगर हम कलेक्टर की बात करते हैं, इन्होंने पूछा है कॉमन कलेक्टर. सो कॉमन कलेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? अगर मैं कॉमन कलेक्टर की प्रॉपर्टी को देखूं तो इनपुट जो रेजिस्टेंस है दैट इज वेरी हाई, आउटपुट रेजिस्टेंस इज 0, द फर्स्ट प्रॉपर्टी. द फेज शिफ्ट इज 0 डिग्री, थर्ड प्रॉपर्टी. एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट? इट्स voltage gain. The voltage gain is just close to 1, and current gain is very high. Clear है यहाँ तक? So common collector configuration has input resistance very high, output resistance lowest, no phase shift, voltage gain is close to 1, and current gain is very high. Now check करते हैं अब कौन सा ऑप्शन है. Low voltage gain, yeah, it is correct, and low current gain. So low current gain is wrong. That's why this A option is wrong. Now low voltage gain and high current gain, it is better. Clear? Now option को और चेक कर लेते हैं एक बार. High voltage gain wrong, because low voltage gain and high voltage gain again wrong. So for this question the correct answer is B. So a common collector amplifier or common collector configuration has low voltage gain and high current gain, as well as high input resistance, high input resistance and low output resistance. ठीक है यार. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ 15-16 क्वेश्चन लेते हैं. द गेन ऑफ ए वोल्टेज फॉलोअर इज ग्रेटर देन 1, एक्जैक्टली इक्वल टू 1, स्लाइटली लेस देन 1 एंड 0. ठीक है. सो अगर हम बात करते हैं वोल्टेज फॉलोअर की, ठीक है. सो ए वोल्टेज फॉलोअर इज ए सर्किट whose output voltage follows the input voltage. That is V0 is equals to Vi. Now it is output, it is input. Now output upon input is 1, so the gain is 1 unity. So gain is unity. ठीक है यहाँ तक. सो द गेन ऑफ ए वोल्टेज फॉलोअर इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1. ठीक है बेटा यहाँ तक. सॉरी, इट इज बी नाउ. अगर हम थोड़ी बात कर लेते हैं वोल्टेज फॉलोअर कौन बन सकता है. सो अगर कॉमन कलेक्टर की देखें तो उसका तो करंट गेन 1 होता है, बट जो वोल्टेज गेन है हाई होता है. कॉमन इमीटर जो है उसका मॉडरेट वोल्टेज गेन और मॉडरेट करंट गेन होता है. बट जो कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर का जो वोल्टेज गेन है दैट इज approximately equals to 1. So it is voltage follower. ठीक है यहाँ तक. ये बात समझ में आ गई होगी. Now the other name is also called as buffer. It is also called buffer. Then it is also called emitter follower. So common collector जो है उसके इतने सारे नाम है: voltage follower, buffer, emitter follower. ठीक है यहाँ तक. नेक्स्ट आ जाते हैं. द सर्किट अरेंजमेंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर यूज एज ए बफर. सो वी हैव क्लियर नाउ द बफर इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज फॉलोअर, इमीटर फॉलोअर एंड कॉमन कलेक्टर. सो वी हैव 4 नेम. सो वी हैव 4 नेम ऑफ कॉमन कलेक्टर एज वोल्टेज फॉलोअर and next we have buffer and next we have the emitter follower.
emitter follower. क्लियर है ना? बफर का जो गेन है वो कितना होता है, यूनिटी हो जाएगा, क्योंकि बफर को हम लोग और भी क्या बोलते हैं, वोल्टेज फॉलोअर. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? I think it is common emitter. It is the first one is common emitter. Common emitter. That's why the correct answer is C. Clear है? Next question देखते हैं. Now 17 question देखते हैं. In the common emitter configuration, if the transistor is in the active mode, then what happened? ठीक है. So for active mode, for common emitter active mode, we have the gain is beta, that is equals to IC अपॉन IB. ठीक है यहाँ तक क्लियर है? So the IC is equals to beta IB in case of common emitter. Okay, but in case of common base, the alpha is IC upon IE. So it is IC equals to alpha times I. Is it okay with you? Common base, common collector, clear. Now if you have common collector is common, then base is at the input, base is input and emitter is output. So gamma is what? IE upon IB. Okay, so IE is equals to gamma times IB. So for all configuration, either it is common base, common collector, common emitter, the correct relation are these, but they are asking for what? Common emitter only. So for common emitter, the relation is IC equals to beta IB. So IC equals to beta IB. IC equals to beta IB is correct for common emitter, and this is for IE is equals to alpha IB. It is nowhere. IB equals to beta IC. It is also wrong. And IC equals to beta IB, it is also clear. So it is IE equals to beta IB. It is IE equals to. So it is wrong. So correct answer is A. ठीक है यहाँ तक. Next question देखते हैं. Phase difference between the output and input voltage of common emitter amplifier is. ठीक है. So we have different configuration: common base, common emitter and common collector. So the phase difference phi is here 0 degree. But in case of common emitter, phi is 180 degree, and in case of common collector, the phi is 0 degree. Now in case of common collector and common emitter, if input is this, then you will get the output as this, common collector and common base. But in case of common emitter, the output is just reverse of that thing. In case of common emitter, it is common collector and common base. Clear? So common emitter amplifier has a 180 degree phase shift. Okay, so for this question the correct answer is A. ठीक. Next question देखते हैं. Now next question है 1920. Amongst the three configuration, the highest input impedance is obtained by. ठीक है. So अगर हम दो ही configuration में comparison करेंगे कि common जो emitter है that is has medium input resistance and high output resistance. Clear है? So अगर मैं comparison establish करता हूँ common base और common कलेक्टर में, ठीक है. सो कॉमन जो बेस है इसका इनपुट रेजिस्टेंस आपको पता है 0 है, इसका आउटपुट रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट है, और जो कॉमन कलेक्टर है इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होता है ना, आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, किस कॉन्फ़िगरेशन के जो इनपुट इंपीडेंस है हाईएस्ट होता है, तो हाईएस्ट इनपुट इंपीडेंस इज गिवन बाय कॉमन कलेक्टर. So for this question, the correct answer is C. Now next question at 20. An emitter follower has high input impedance, high output impedance, high input impedance, low output impedance, low input impedance, high output impedance, low input impedance and low output impedance. Now first thing, the emitter follower, जो emitter common collector जो है इसको बोलते थे हम voltage follower. Then we also call as emitter follower. ठीक है बेटा यहाँ तक. ना अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए, either you just have the common collector configuration, voltage follower or emitter follower, and it is also called as buffer. I think it is buffer also. Then the first property is the input resistance is high and output resistance is 0.
Third thing, gain, the voltage gain is 1. Clear है यहाँ तक? Then third thing is phase shift is 0 degree. The fourth thing is what? High current gain. And next thing is what? Types of feedback. There is voltage series feedback. इतनी सारी प्रॉपर्टी, उतनी कॉमन कलेक्टर, कॉमन वोल्टेज फॉलोअर, इमीटर फॉलोअर, बफर की. तो देखते हैं पहला हाई इनपुट इंपीडेंस एंड हाई आउटपुट इंपीडेंस. सो इट इज रॉन्ग. Output should be low. High input impedance and low output impedance. That is correct. So for this question, the correct answer is B. Next question देखते हैं.